मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण. वेलकम बैक टू आत्मीय ग्रीन स्कूल, झाड़ेश्वर भरूच. माय नेम इज स्वाति शर्मा and it's class 8 maths, and we revise our second chapter, that is linear equation in one variable. Student, we already revised this chapter, but now I will told you how what type of question is coming on your exams. Okay, so we discussed about MCQ types questions and short answer questions. Okay, first of all, what we learn in linear equations. In linear equation, what is linear equation? So if we talk about linear equation, so we know that there is an algebraic equation is an equality involving variable. It has an equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side, and the expression on the right of the equality sign is the right hand side, that is RHS. Okay, means left hand side, that is called LHS, and right hand side, that is called RHS, and in between them there is equality sign. Okay, understand? Now, in an equation, the values of the expression on the LHS and RHS are equal for certain values of the variable. Means जो भी हमें unknown होता है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है. ओके, एंड whatever the unknown, we called it variable. Okay, in an equation, the value of expression on the LHS and RHS are equal to the certain value of the variable. This value are the solution of the equation. This value called solution of the equation, or zeros of the equation, or root of the equation. Okay, understand? Equation where the expression which form the equation contain only one variable and the highest power of the variable appearing in the equation is 1 is called linear equation in one variable. Okay, equation where the expression which from the equation contain only one variable and the highest power of the variable appearing in the equation is 1 are called linear equation in one variable. Understand? A linear equation may have linear expression on both sides of the equality sign. Okay, linear equation में both side linear expression भी हो सकते हैं. Means both side variable भी हो सकते हैं. Understand? Okay, to find the solution of an equation, we perform the same mathematical operation on both the sides of the equation so that the balance between the LHS and RHS is not disturbed. So this method is called balancing method. Okay, means to find the solution of an equation, we perform the same mathematical operation. Mathematical operation means plus, minus, multiplication and division. Okay, understand? A linear equation may have any rational number as its solution. In an equation, variable can be transposed from one side to the equation to the other. Understand? Now let's solve. See, हमने इस चैप्टर में टू मेथड्स रीड करी है. फर्स्ट इज बैलेंसिंग एंड अनदर वन इज ट्रांसपोज्ड. ओके, सो व्हाट इज बैलेंसिंग मेथड? हम सेम एल्जेब्रिक ऑपरेशन बोथ द साइड करते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. बोथ द साइड हम सेम नंबर से अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीज़न कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे. ओके, सो दीज आर सेम ऑपरेशन. ओके, दिस कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड. एंड व्हाट अबाउट ट्रांसपोजिंग मेथड? व्हेन वी चेंज द साइन. अगर LHS में वो प्लस है तो हम उसका साइन चेंज करके उसको RHS में क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड. Okay, so sign will be changed, so it's called transposing method. Understand? So let's take first example. In example first and second, there are 4 options given, out of which one is correct. Choose the correct answer. Okay, so let's see what we do. If x is equal to alpha, then which of the following is not always true for an integer k? It's given x is equal to alpha. So
Which of the following is not true? So see the expression carefully. Kx is equal to ak. So what we find always true for an integer k. ओके हमें k के लिए उसे फाइंड करना है. जो x इज इक्वल टू a हमारे पास में वो ऑलवेज क्या रहे, ट्रू रहे फॉर इंटीजर k. ओके सो इट्स बी. आंसर बी इज़ करेक्ट बिकॉज k से k कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू a रहेगा. अंडरस्टैंड? ओके नाउ सेकेंड वन. व्हाट इज ऑप्शन क्वेश्चन सेकेंड? इफ 3x minus 4 into 64 minus x is equal to 10, then the value of x is. So first of all we solve this equation. Okay, let's solve. So it is 3x 4 multiplied by 64, 4 4 ja 16, 1 carry out, 4 6 ja 24 and 1 25. Okay, minus minus plus 4x is equal to 10. Okay, is equal to 10. What we can do, our expression is become 3x minus 256 minus minus plus 4x is equal to 10. Okay, this equation become this. Okay, now वेरिएबल्स टर्म्स को एक ही साइड रहने देंगे. 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 10. ये माइनस साइन के साथ में ही था तो इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस. ओके सो हियर इट बिकम 7x इज इक्वल टू, इट बिकम 266. ओके सो x इज इक्वल टू 266 अपॉन 7. ओके व्हेन वी डिवाइड इट, सो व्हाट इज अवर आंसर्स? 7 3s are, so our expression is 266 upon 7 is equal to x. 7 1 ja 7, 7 3s are 21. Okay, and how many remaining? It's 5 is remaining. Okay, so 7 8s are 56. So your answer is x is equal to 38. Okay, so this type you have to solve the questions. Now example number 33 is 15 added to 3 thrice a whole number. 15 added to thrice a whole number gives 93. If we add 15 to thrice a whole number, means let's take the whole number will be x and thrice the whole number we gives 93. Okay, so what we do, 3x is equal to 93 minus 15. ओके सो 3x इज इक्वल टू 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? देयर इज 8. ओके एंड 8 में से 1 गए तो 7. x इज इक्वल टू 78 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी आउट हुआ, 3 6 जा 18. सो आवर आंसर इज 26. ओके अंडरस्टैंड? दिस टाइप यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Okay, now if this type of question is there, if 1 by 3 minus x is equal to minus 2 by 3, then x is. So see here, if we talk about 1 by 3 of x, 1 by 3 minus x, so x को हमें माइनस एक्स को यहीं पर रहने देना है LHS में. RHS में हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे? 1 by 3. 1 by 3 इज विथ प्लस साइन, बट व्हेन वी ट्रांसफर इट बिकम माइनस. ओके सो आवर इक्वेशन बिकम माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 + 1. ओके सो इट्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 by 3. 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1. ओके सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 1. ओके दिस टाइप वी सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टेक सम. So let's take example first. The solution of which of the following equation is neither a fraction nor an integer. So you have to solve all the equation. जिसका भी आंसर फ्रैक्शन या इंटीजर में है वो आपका आंसर राइट है. ओके अंडरस्टैंड? नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + b = 0 is
अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, so you can take ax is equal to minus b and x is equal to minus b upon a is the solution, which is the option C. So your answer is C option is right one. Okay, now let's take another one. 8x minus 3 is equal to 2x plus 17x. Then x is, so what is the x? So let's solve it. 8x 17 इधर प्लस के साथ है तो यहाँ पर आकर इधर ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा एंड योर आंसर इज व्हाट इज बिकम 9x इज इक्वल टू 28. सो x इज इक्वल टू सॉरी माइनस 9x होगा. ओके, 28 अपॉन 9 विथ माइनस साइन. सो हियर सी minus 28 upon 9, it is not a fraction, it is not an integer, it's a rational number. Okay, understand? So it's a rational number. The shifting of a number from one side of an equation to other is called, always it's called transposition method. Okay, remember it, it's a transposition method. Now question number 5 is 5x upon 3 minus 4 is equal to 2x upon 5, then the numerical value of 2x minus 7. So first of all you have to find the value of x. Okay, if you find the value of x, so 5x upon 3 minus 2x upon 5 is equal to 4, because 2x upon 5 RHS में प्लस साइन के साथ में है तो वो LHS में आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. और -4 LHS में माइनस साइन है तो वो RHS में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. अंडरस्टैंड? व्हेन वी टेक LCM, सो 3 and 5 का LCM होगा 15. ओके, सो इट बिकम 25x minus 6x is equal to 4. So it's a 19x upon 15 is equal to 4. So 19x is equal to 60 and x is equal to 60 upon 19. Okay, so your value of x is 60 upon 19. Okay, so what is the equation? अब हमें इस इक्वेशन में रख देना है उस वैल्यू को 2x minus 7 में. what is the value of x? 60 upon 19 minus 7. Okay, so it become 120 upon 19 minus 7. So when we take LCM, okay, when we take LCM, so okay, 19 into 7 is 7 9s are 63, 63 6 हो जाए 3 आ जाएगा, 6 कैरी आउट होगा, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 and 13. Okay, so 133. So what is your answer is? Your answer is minus 13 upon 19. So you B option is the right one. Okay, understand? Now the value of x for which of the expression 3x minus 4 and 2x plus 1 become equal is. Okay, so we have to find the value of x. Okay, which the expression 3x minus 4 and 2x plus 1 become equal is. Okay, so what is the value of x? 3x minus 4 is equal to 0 रखेंगे तो x is equal to क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस 4 अपॉन 3. ओके, सो x की ऐसी वैल्यू जिसमें ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल हो जाएं. ओके, सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज let's put minus 3. If we put minus 3 in this equation, so our value is minus 9 minus 4. Okay, so it become minus 13. And second one, 2 into minus 3, that is minus 6 plus 1, so it become minus 5. So it's not equal. Okay, now again 0, if we put 0, so this equation 3x will become 0 and 2x become 0. So minus 4 is not equal to 1. Okay, let's put let's put 5 in this question. 3 5s are 15 minus 4, that is 11, and 5 2s are 10. 10 minus 7, 10 plus 1 11. So
this answer is the right answer. Okay, now let's take another one. If a and b are positive integer, then the solution of the equation ax is equal to b has to be always. If a and b both are positive integer, then the solution of the equation is always positive. Okay, linear equation in one variable has only one variable with any power. Linear equation in one variable has only one term with a variable, only one variable with power 1. ओके, मतलब हमारी जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या कोई भी पावर हो जाती है? नहीं. क्या पावर, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अंडरस्टैंड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन? So if we talk about linear expression, so which one is the right one? Linear expression means पावर भी 1 होनी चाहिए. यहाँ पावर आपको फर्स्ट वन में 2 पावर दिख रही है, सेकेंड में भी पावर 2 दिख रही है, इसमें x की पावर 0 है. नो, नाउ D is our right answer. Okay, understand. A linear equation in one variable has only one solution, two solution, more than two solution, no solution. So what is the answer? Only one solution, because this is a linear equation. Okay, understand. The value of s in 1/3 plus s is equal to 2/5. So what is the value of s? s को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है 1/3. So it become a minus. Okay, now let's take LCM. LCM is 15. So our answer is 1 upon plus 1 upon 15. So our answer is 1 upon 15, that is B. Okay, so B option is the right answer. Okay, so this type you have to solve all the questions in MCQs. And remember one thing, do all the questions. Okay, don't skip any question. Okay, एंड रिमेंबर, छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप अच्छे से कर सकते हो. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. -4/3 y इज इक्वल टू -3/4. हियर -4/3 इज विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ y. मल्टीप्लिकेशन में हो y के, तो अगर हम ट्रांसपोज करने जाएंगे तो ये -3/4 ये क्या हो जाएगा? 4/3 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट इज़ 3 upon -4. माइनस से माइनस कट हो जाएगा. दैट इज़ अवर 9 upon 16, और यू कैन राइट इट 3 upon 4 होल स्क्वायर. ओके, सो यू कैन राइट इट 3 upon 4 होल स्क्वायर ऑल्सो. सो योर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. So let's take some fill-ups. In a linear equation, the dash power of the variable appearing in the equation is 1. So what is the power? Highest power. Okay, the solution of the equation 3x minus 4 is equal to 1 minus 2x is, see, it is a linear equation. So what? How many solution is there? Only one solution. Okay, so its answer is 1. Okay, understand. Now let's next question is the solution of an equation 2y is equal to 5y minus 18 upon 5 is. So let's solve this question. 5y minus 18 upon 5. Okay, so you can take 2y minus 5y is equal to minus 18 upon 5. So here it is minus 3y is equal to minus 18 upon 5, and 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीज़न में. सो एन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. y इज इक्वल टू 18 upon 5 इंटू 1 upon 3. सो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. सो योर आंसर इज 6 upon 5. ओके, सो योर आंसर इज 6 upon 5. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी, 9x minus what is equal to minus 21 has the solution minus 2. 9x minus what is equal to minus 21 has the solution minus 2. अगर हमें 9x में से हमें ऐसा क्या माइनस करना पड़ेगा जो हमें सॉल्यूशन क्या दे दे? -2 दे दे. सो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है
हम x की जगह पर रख देंगे 9 इंटू -2 इज इक्वल टू -21. ओके, सो what is our answer? That is C. 9 into -2 plus what is equal to -21. So it is -18 is equal to plus question mark is equal to -21. Okay, so question mark is equal to -21 plus 18. So our answer is -3. Okay, understand? So our answer is -3. ठीक है, understand? 3 consecutive number whose sum is 12 are, and so how do we find the 3 consecutive number? See, x plus 1 and x plus 2 are 3 consecutive number and whose sum is 12. So it's given, so we can write it's, so it's a 3x plus 3 is equal to 12. So 3x is equal to 12 minus 3, so that is 9. 3x is equal to 9, so x is equal to 3. So first number is our 3, then x plus 1, that means 4, x plus 2, that means 5. So your answer is 3, 4 and 5. Okay, this type you have to find all the solutions. Okay, so read this type of question and do it by yourself. सम क्वेश्चंस आप अपने मन से भी करेंगे, ये जो मैंने आपको फिलअप्स दिखा रही हूँ ये आपको करना है अपनी नोटबुक में. ओके, अंडरस्टैंड? सो डू इट इन योर नोटबुक एंड हैव अ गुड डे.